अभी राइट जाएंगे हाँ जी Everyone has been sharing their memories this evening. It's obviously a masterpiece everyone has grown up with and seen at some point. What are your earliest memories of Mughal? Well, my earliest memories are my father started his career with this film, Mughal-e-Azam. I mean, this film perhaps has been seeped into our systems, me and the entire family, and thanks to me, even into her system, into all my children. You know, everybody has been hearing of Mughal-e-Azam. We've been constantly hearing from my father all what happened. Why don't you come here? Or because, and then even when it re-released, when it was colorized, I mean, I did my bit even then. I wanted to be part of it just for the sake of my father's involvement in this film. I always thought it was something which belongs to me like it belongs to everybody today. And more so to me because right from our childhood we've been hearing about how the war scenes were shot, how the romantic sets were put up and what kind of dignitaries. And then, you know, sometimes the ad film, the premiere film which was being telecasted at times on Doordarshan whenever they showed Mughal-e-Azam, or on the net when we get to see, I'm always eager to see my father there, always eager to see the kind of, you know, opulence, the way they had staged the premiere then. That's the reason when the film was re-released, we tried to create the same ambience. The print had come on the elephant. The whole film looked far more magnificent in color. The sound was new. I mean, the entire music was redone in stereo. And we hope to see the same kind of effect, you know, today on stage. In fact, we are looking forward to see this and enjoy as we've enjoyed the film, relive the moments right from our childhood to now, and hope to carry it for the next generation too. Srinidhi ma'am, anything you want to say about your memories? Why is it so special? Special because my dearest and favorite friend Manish Malhotra has made costumes for this play, and I'm really excited to see the play. And sir, one more question. We've been hearing a lot of news reports about bombs, about the production of. We are here for this, so let's stick to this. All right, Okay. Thank you. जल्दी करो इरफान जी, कैसे आप? ठीक है। तो इरफान जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि वो आपकी एज क्या थी जब आपने मुग़ल-ए-आज़म देखी थी? भाई मुग़ल-ए-आज़म जब रिलीज हुई थी तब पैदा नहीं हुआ था, आपने लेकिन देखी थी तब? मैं बहुत छोटा था, मैं करीब 8-9 साल का रहा हूँगा मैं, तब देखी थी। So how excited you are to watch the musical play Mughal-e-Azam? I am excited about anything and everything which has to do with K. Asif. I am fascinated with this human being, and I am a biggest fan of K. Asif, and I love this human being, and I don't have words to express the kind of person he was. So what do you think makes Mughal-e-Azam relevant even in today's time? I think his passion, the way he looked at the story, and the kind of passion with which he made the film. It will be evergreen forever. Sir, any words on Dilip Saab? So दिलीप साहब सबके एक्टर्स के भगवान हैं, एंड दिलीप साहब को ऊपर वाला सही सलामत रखे,
एंड दिलीप साहब जैसे इंसानों को हमारी उम्र लग जाए, वो अब भी इस वक्त भी काम कर रहे हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दिलीप साहब के लिए क्या मतलब, उन जैसा स्टार कभी हुआ नहीं और शायद होना मुश्किल है। So, do you ever foresee a situation where someone would probably even dare to make a remake of Mughal-e-Azam? If yes, then who do you think would be the best film? नो, आई डोंट थिंक इट कुड बी मेड। और इस तरह की ख्याल सोचना भी नहीं चाहिए। इस तरह के विचार गंदे विचार हैं, क्योंकि जो एक चीज़ शाहकार जो बन चुकी है उसको छेड़ना नहीं चाहिए। वो अपने आप में कंप्लीट है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो तो जब मुग़ल-ए-आज़म बन रही थी, इतने सालों में जब बनी, उसके बीच में उनके राइटर्स और उनके कई टीम के लोगों ने वैसी फिल्म उसी स्टोरी पे फिल्में बना दी और क्या से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि बनाने दो, हमारी फिल्म आएगी जब आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो उस तरह के रीमेक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फिल्म जो है वो अपनी जगह पे है और अपनी जगह पे रहेगी अटल। आपने एक्टिंग की शुरुआती दिनों में थिएटर काफ़ी किया है, आपको जी। लगता है कि आपको एक बार फिर से थिएटर में आना चाहिए या कुछ ऐसा मन में है सर? यार मौका लगेगा ज़रूर आएंगे, इच्छा रहती है, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिला है जिसमें कि इतना समय गुजार सकें, इतना समय दे सकें। अगर कहीं मिलेगा ऐसा प्रोजेक्ट तो ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। So what are your expectations from the play? कि मज़ा आएगा। एंड यू नो कि आसिफ का शाहकार है, उसके बाद प्ले बना रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर आखिरी सवाल सर, हर जगह ए दिल मुश्किल की रिलीज को ए दिल है मुश्किल को मेरी शुभकामनाएं, उसकी मुश्किलें ख़त्म हो और सबको थोड़ी समझ आए। सर